program, but placement starts in third semester. So it is very important for MBA aspirants, irrespective of any specialization, that how do you orient yourself, with what orientation you are joining the college, and then what do you do in the first year of your MBA, right? So I hope that this session will give you some idea, what to do, and at the end, we would give you an option for designing SOP. You can look at the last point of this flow of presentation. We will guide you that how an SOP can be developed. This SOP, we can evaluate if you are interested. This is entirely, voluntary exercise. You are not going to get any mark or any grading on this, but this will give you an idea that when you will be there in your respective specializations, then what you need to do. Okay, so you will brainstorm in yourself, and then you will come out with an outcome that will be a kind of document which you can share with us. We can evaluate for you, and you will have an idea that how you are going to be here for next 2 years, and especially for the first year of your MBA, right? Anybody has any thing to share? So the presentation flow is going to be like this. First of all, we will share some of the success stories at UPES. So these are the students that they means it's a sample. There are many more students, those who have got a lot of success stories, but the idea is to give you an example that how these students came and what was their orientation during the first semester, and at the very soon, just after first semester, they started working on their plan, and then they started also getting results. A very interesting case, just 2 days back, one of our alumni who graduated in 2014, right, joined in CBRE London, right? And CBRE is a very, you can say, one of the biggest real estate investment company. So he has joined. So he graduated in 2014. Then he again worked for 4 5 years. Then he again came to us that he wanted to pursue one more degree. So he went to University of Chicago, where we helped him to design SOP and all those documents. And then finally he got full scholarship in University of Chicago. And then 2 days back he joined in London, right? So that is the story. We'll share his profile also with you. So here you can see Syed Mohammad Raza Takwi. He went in the last semester to Berkeley Haas, which is one of the top 10, business school of the world, where he spent a semester, and he completed certain courses. So he actually moved in the mobility program, which is between University UPES and University of California. It's Berkeley campus, right? So he completed his successfully his semester. Now he's also placed, and he is in the fourth semester, and very soon he's going to join industry. Similarly, Kirti Gupta got very good placement with Accenture, with around 28 lakh rupees package. Very intelligent girl, and she always believe in planning, and she worked on various you can say kind of SOPs, statement of purpose. Officially she didn't prepare, but she had come with an idea that what she need to do and how she need to prepare herself along with the credit courses. uh, and then Shweta Sharma, these are the current students, but they are also winning quite number of laurels for ourselves and for the school. Yeah. So yeah, next, can we go to the next slide? Right. So this is a small video, and the purpose of showing this video to you is that you will get an idea that what is all to be done at the campus when you are here, right? So can you please run the video?
In between, students, if you have any question, please feel free to note down and write down your questions in the chat box. ऑडियो नहीं आ रहा है. वीडियो ऑडियो नहीं आ रहा अमित. Sir, at my end, the audio is coming. What I can do is I can share this, with the students and they can go through this video once at Okay, their own end so that we don't waste this time and we move ahead. I'll share it okay, in the fine. link itself. Right. We can move on, sir. Yeah, please. So actually, this video is talking about that what kind of resources we have and how can we use those resources, to prepare ourselves. So it will give you a very. There are many videos, but I chose this video to just to give you an idea that how we are. These students are looking at the university resources. Yeah, Swati, we will share as Amit said. हम लोग आपसे ये लिंक शेयर कर लेंगे. तो आप उसको बात कर लेंगे. ठीक है, यू कैन लुक एट. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दिस इज द प्रोफाइल विच आई एम टॉकिंग अबाउट. तो अगर आप लोग इसका आप अगर लिंक्डइन प्रोफाइल खोलेंगे अमित, तो वी विल बी एबल टू शो द स्टूडेंट्स दैट what his journey has been, after 2014. So he joined an integrated program, BTech MBA Power Management, and he graduated in 2014. After that, he joined industry. He worked 2 3 years, and then he realized that he still has potential to grow, and he decided that he should get some international exposure. So he came to us, and then he tried to get an idea that how can he. Yeah, Shivang, we will try to answer your question. Just hold on, right? Yeah. So it is not that the only oil and gas management student are getting placement, but they are the highest packages, and that's why those are more into limelight. But there are other good figures also. तो ये जो प्रद्युम्न द्विवेदी हैं, so he graduated, then he worked with the industry, and then he came to us that he want to pursue one of the best universities in the world. And as you know, हम सबके पास resources बहुत limited ही रहते हैं, तो scholarship was also important criteria. So he actually applied for top 10 universities in the world, and he wrote lot many SOPs, and got lot of reference letters from professors and from people with whom he worked. And as a result, finally University of Chicago से इनका admission हुआ with full scholarship. He completed that, and you can check on yourself his profile, and that's how he's placed with CBRE in London. So 2 days back, I got his message that he has joined. So I thought this is the right time where and this is a purpose also. So as you can see, the heading of this slide is the student's journey at UPES and importance of SOP. So how do you think about your profile, and how do you plan your stay at the campus, and after that how can you take it forward? Let's move on to next slide. In between, if you have any question. Bharat Verma is saying no audio, sir. He's not able to hear. Bharat, I believe the audio is available for others. If you're talking about the audio of the YouTube video of Pratik Shirsagar, we will share the link with you. I hope everybody else is able to hear Dr. Prasoom Dwivedi. If not, please let us know. So let's talk about little bit about the concept of statement of purpose. So there are 6 P's,
right? uh, which are, you know, describing the statement of purpose. The first P is purpose. So what is the goal and purpose? So why do you want to join any MBA program, any specialization? That is very important. Where do you want to join? So if you have decided that UPES, you have decided, then can you share, you know, your tentative specializations in the Q&A? What are your tentative specializations? So why do you want to pursue any particular degree, right? सो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट, आप लोग अपने टेंटेटिव स्पेशलाइजेशंस लिखेंगे तो उससे आइडिया लगेगा कि आपका क्या ओरिएंटेशन है, एंड देन विल बी एबल टू हेल्प यू कि हाउ कैन यू रिलेट विद योर बैकग्राउंड, राइट? सो एनी रिसर्च क्वेश्चंस डू यू हैव? ये जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं ये कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बात करेंगे, जिसमें आपको गोइंग फॉर स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग, आयुष नेगी सेड, finance, Yash Pathak said, strategy and consulting again, marketing, analytics, very good. वंशिका, मेजर माइनर नहीं है हमारे यहाँ, बट प्रोफाइलिंग हम उस तरह से कर सकते हैं, फिनेंस, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, वेरी गुड, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, वेरी गुड. तो दीज आर योर, यू नो, रेस्पेक्टिव स्पेशलाइजेशंस, राइट? तो इसमें ये है कि what is that which you really want to do, which can add value to the industry. तो आज हम लोग थोड़ा सा इस पे बात करेंगे in next 3 slides, you know, with the respective specializations, ठीक है? And those questions will give you an idea. We are getting a lot of responses. Strategy, oil and gas, marketing, strategy and consulting has got a lot of attention from the students. Yeah, very good. Finance is also very major area. Logistics and supply We have chain. aviation also, Dr. Yeah, Prasoom. yeah. Aviation is also there. I missed that. Aviation is there. Business analytics is there. MBA in Yes, finance. So analytics finance is there. specialization is there. Very good. गुड. सो आप लोग जो भी स्पेशलाइजेशंस को प्लान कर रहे हो, उन एरियाज में वो क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, एंड दोज क्वेश्चंस शुड नॉट बी बेसिक क्वेश्चन. मतलब आप अगर ऑयल एंड गैस क्या है, बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. वो क्वेश्चन जो इंडस्ट्री फाइंड आउट कर रही है, तो उन क्वेश्चंस को आप prepare करने के लिए you can spend your 1 year and you can do multiple projects, you can interact with the industry, you can interact with the faculty, and lot many things you can do, right? What do you do after this program? So obviously what will you do? तो आप कहोगे साहब नहीं, हमें तो प्लेसमेंट लेना है. प्लेसमेंट तो लेना ही है, बट हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू द इंडस्ट्री? That is very important. So in this purpose, you can decide, you can try to answer these questions, right? और इसमें जो सबसे important चीज है, whatever you want to do, how do you relate it with your background? Your background means your basic education. आपका graduation क्या है? Whether you have done BSc in maths or BSc in bio, or you have done engineering, or you have done engineering in multiple specialization, multiple branches, क्या किया हुआ है आपने, and how will it help you to, you know, solve these issues, or how will it help you to contribute to the industry along with your master's degree? तो ये past experience है. Next P is past experience. What kind of past experience you have, how will you relate to your past? अब ये जो experience है, हमारे यहाँ जो एक challenges आ रहे हैं कि बच्चे ज़्यादातर freshers होते हैं, तो एक work X होता है, बट उसके अलावा आपने बहुत सारे इवेंट्स किए हुए होते हैं, आपने बहुत सारी जगह पे लीडरशिप स्किल्स दिखाए हुए होते हैं, तो आप उस सब को, हर चीज को रिलेट कर सकते हो. जैसे ये जो प्रद्युम्न का केस है, प्रद्युम्न ने हम लोगों के साथ एक प्रोजेक्ट किया था. आप लोगों को याद होगा, एक केदारनाथ में 2013 में एक नेचुरल डिजास्टर हुआ था. उसके बाद हमें डेटा कलेक्शन करने जाना था, तो कोई भी स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स जो थे, दे वर नॉट एग्री, दे वर नॉट रेडी टू सेंड देयर किड्स फॉर डेटा कलेक्शन. हम लोग को ऊपर पहाड़ों पे जाना था, नियर बद्रीनाथ. तो उस सिचुएशन, और हमारा डेडलाइन था, हमें डेटा कलेक्शन के लिए जाना ही था, बट
we ensured our security and everything of the student and of the faculty members. तो इसने करीब 11 बच्चों को अपने साथ इकट्ठा किया, उनको कन्विंस किया, एंड वी ensured all the security measures for the students, and then we collected that data. तो इसने अपने SOP में वो चीजें मेंशन करी कि that how he showed his leadership, during his college days, and how it helped him and his friends, कि कैसे आपको सोशल इश्यूज समझ में आते हैं। और मैं आपको बताऊं, इन सब चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे, आपकी एनालिसिस में। इन सब चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट आता है जो उसके क्लियरली उसके माइंडसेट पे, उसके प्रोफाइल में दिखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वर्क एक्स हो तभी आप एक्सपीरियंसेस लिख पाएँ। यू कैन रिकॉल कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में आपने कोई इवेंट्स किए हों, और उनमें आप कैसे अपनी लीडरशिप स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, व्हाटएवर, मैनेजमेंट के जो डिफरेंट एरियाज हैं, एंड हाउ विल यू रिलेट योर पास्ट एक्सपीरियंस विद दिस प्रोग्राम, explain with the help of an example. So this is what you can do. Then program, why at UPES, your work connects with the program, how does the program will help you, and how will you contribute to the program. ठीक है, ये क्वेश्चंस आप तभी आंसर कर पाओगे when you will be having research questions in your mind. And one or two things about your personality, आप किस तरह के पर्सनैलिटी हो, पॉजिटिव पर्सनैलिटी, यू आर आउट गोइंग, you are always looking for challenges, you like to work with the people, you like teamwork, and all those kind of concepts which are generally used for management programs. And what do you know about the student body, ये एक बड़ा important चीज है। तो आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है, स्कूल ऑफ बिजनेस की वेबसाइट, स्कूल ऑफ बिजनेस के जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको आप विजिट करो। तो हमारे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट बॉडी है जिसको हम स्टूडेंट काउंसिल बोलते हैं। उसके अंदर लगभग 20 क्लब्स हैं, और अभी रिसेंटली एक उद्यम इवेंट कराया स्टूडेंट्स ने, और उस उद्यम इवेंट में मेरे ख्याल से कम 20 डिफरेंट इवेंट्स हुए, एंड वो सारे के सारे इवेंट्स जो थे वो किसी ना किसी बिजनेस एस्पेक्ट को रिलेट कर रहे थे, और वो सारा का सारा काम स्टूडेंट ने किया। तो ट्राई टू गेन नॉलेज कि हाउ दीज प्लेटफॉर्म्स कैन हेल्प यू, इन प्रिपेयरिंग यू, एंड इन मेकिंग योर प्लान बेटर, राइट। एंड सिमिलरली इंग्लिश आपकी सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जार्गन यूज नहीं होना चाहिए। और या सो इट शुड इन्वॉल्व अ प्रोसेस मीन्स थोड़ा सा टाइम लेके, मतलब ये प्रैक्टिकली जब आप कहीं कॉम्पिटिटिव उसके लिए SOPs भेजते हो, तो थोड़ा सा 2 महीने 3 महीने का टाइम लेके उसको सोचिए, लिखिए और फिर रिव्यू करिए, फिर एडिट करिए। सो give sufficient time to this exercise, and that's how we have these very important 6 P's for designing SOPs. एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, जहां पे हम लोग ये कोशिश करेंगे कि क्या क्या रिसर्च क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो देखिए ये है कि बिजनेस एजुकेशन में 3 बड़े क्लियर कट वर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं। यू कैन नोट डाउन, अमित जी, आई मे रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन लुक एट Q&A, अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बिटवीन आता है तो we can, or we should handle the question at the end itself. Okay, that we'll do, yeah. So अब यहाँ पे सवाल उठता है कि how should we understand the MBA program in the present scenario? और आपको मैं बता दूं कि पेंडेमिक के बाद से इंडस्ट्री एकदम से चेंज हुई है। इनफैक्ट यूपीएस में भी जो कंपनीज का आना है या उनके जो जॉब प्रोफाइल्स हैं, उन जॉब प्रोफाइल्स में से अचानक से एक टर्न अराउंड हुआ, एंड दे स्टार्टेड आल्सो लुकिंग एट द स्किल सेट्स रिलेटेड टू डिजिटल एंड रिलेटेड टू एनालिटिक्स एंड लाइक दिस। सो दिस इज अ रीसेंट डेवलपमेंट जो हम आपको अभी बता रहे हैं, एंड आप इन लाइंस पे सोचना शुरू कर सकते हो अभी से। तो ये जो 3 वर्टिकल्स आ रहे हैं, ये 3 वर्टिकल हैं। बिजनेस ऑफ कोर्स इज देयर बिकॉज MBA इज योर डिग्री। सो बिजनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटलाइजेशन, ये 3 मेजर वर्टिकल्स हैं, और इन मेजर वर्टिकल्स को आप कैसे अमेलगमेट कर सकते हो इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस।
आई होप आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा। एंड तो आप देखिए ऑयल एंड गैस में आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? आपको मालूम है आज की तारीख में जितनी भी ये ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, जैसे ओएनजीसी है या गेल है ना? ये जो कंपनीज हैं ये अपने आप को ऑयल एंड गैस कंपनी नहीं बोलते अब। नाउ दे कॉल देमसेल्व्स एनर्जी कंपनी। क्यों? क्योंकि अब ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी। तो इन कंपनीज को भी अब टारगेट्स दिए गए हैं या एजेंडा दिया गया है कि आपको बाय 2040 आपको ग्रीन कंपनी बनना है। यू नीड टू बी अ एनर्जी कंपनी, एन एनर्जी कंपनी रादर देन कन्वेंशनल एनर्जी कंपनी। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल सेट डेवलप हो रहा है। जो लोग ऑयल एंड गैस में अपने आप को इंटरेस्टेड हैं, है ना, जाने के लिए, तो ये उनके लिए है कि वो इस एरिया को एक्सप्लोर करें और इस एरिया के रिसर्च क्वेश्चंस रेज करें। व्हाट डू दे वांट टू डू एंड व्हाट आर दोज टिपिकल इश्यूज ऑफ द इंडस्ट्री which they are looking for, and if you can help them to solve those issues, how will you do that? Okay, दूसरा चीज जो अभी हमने आपको डिजिटलाइजेशन बताया था, तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भी मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईओटी है, सेप यूसेज है ना? सो इन सॉफ्टवेयर्स का जो यूज है, ये कैसे इंटीग्रेट हो रहा है बिजनेस प्रोसेसेस में, ये समझना बहुत जरूरी है। एंड हाउ कैन यू डेवलप, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बैकग्राउंड क्या है। एक चीज और आप लोग अपने माइंडसेट में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आप टेक्नोक्रेट हैं या आप नॉन टेक्नोक्रेट हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर्स डेवलप नहीं करने हैं, आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी है, आपको उसका मैनेजमेंट सीखना है, आपको डेवलप नहीं करना है। इट इज जस्ट लाइक कि आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हो, तो आप अगर नॉन टेक हो, इवन देन यू आर यूटिलाइजिंग मोबाइल फोन, ठीक है? इट इज जस्ट लाइक दैट। तो आपको उसका मैनेजरल पर्सपेक्टिव में ज्यादा इंटरेस्ट रखना चाहिए रादर देन डेवलपिंग दैट हेजिटेशन कि भाई हम तो टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। ईडीआरएम, energy derivative and risk management, it's a one area where इंडिया में तो अभी तक ये पूरे पोटेंशियल पे आया नहीं है। जिस दिन ये पोटेंशियल पे आ जाएगा, देयर विल बी lot of jobs and lot of money will be there in the market. So city gas contribution, city gas distribution, this is one area. Gas marketing, petro retailing, software development, and energy consulting. So I'm expecting some questions on oil and gas. If you are interested, you just feel free to put your queries. Right now, next let's move on to the next specialization, that is power management. So power management में आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि ई व्हीकल के ऊपर कितना एम्फेसिस हो रहा है गवर्नमेंट का। तो ये पूरा ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम कन्वेंशनल टू नॉन कन्वेंशनल, राइट? सो योर vehicles will start operating on maybe on batteries, and batteries will be charged by electricity. So will transition है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से इलेक्ट्रिसिटी पे, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी जो है, जो टारगेट्स हैं वो कोल बेस से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड हो जाएगा, सोलर और विंड काइंड ऑफ थिंग, राइट? सो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस जब हम जनरेशन साइड में चले जाते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, रिलायंस हैज put a lot of money into this segment to build it as a business, right? Digital innovations, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, ये अपने आप में एक, जैसे ट्रांसमिशन बिजनेस अभी भी बहुत ही रेगुलेटेड है, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट नहीं है। तो आने वाले टाइम में ट्रांसमिशन बिजनेस और या वर्टिकल will also be unbundled for the private players, right? Net zero transition is also an area where a lot of research questions can be raised. Similarly, in aviation management, aviation analyst, airline revenue manager, airport manager, airline manager, these are the some of the working areas where what kind of challenges the airline manager faces, right? Aviation marketing manager, aviation network planner. So these are some of the key areas, key skill sets which you can develop during your program and you can get a good job in the market. जैसे आजकल मालूम है एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आने वाला है, रिसेंटली पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माइक्रो एयरपोर्ट्स। तो ये ड्रोन बिजनेस जिस तरह से ग्रो कर रहा है ना, तो अब इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए देयर विल बी अ
a separate facility जहां से इन ड्रोन्स को ऑपरेट किया जाएगा। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बात करना शुरू कर दिए हैं कि नाउ द सिटीज वुड बी हैविंग माइक्रो एयरपोर्ट्स जहां से ये ड्रोन जो है ऑपरेट किए जाएंगे। तो आप समझो कि ये पूरी की पूरी तरह से एक बिजनेस वर्टिकल नया डेवलप होगा, विच विल बी एक्चुअली, क्योंकि इसकी जो स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं वो एविएशन बिजनेस से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो हमारे ख्याल से एविएशन ऑपरेटर्स या एविएशन इंडस्ट्री बिजनेस के लोग जो हैं वो लोग ही इस वर्टिकल को पकड़ेंगे, या नए लोग भी अगर एंटर करेंगे तो उनको अगेन एविएशन का स्किल सेट का ज़रूरत पड़ेगा। सिमिलरली इसमें हमने लिस्ट नहीं किया है, लेकिन हम आपको अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहे हैं कि अभी इसरो ने एक रिसेंटली टेस्ट किया है जिसमें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल उन्होंने टेस्ट किया, और ये बताया जाता है कि अगर ये आगे सक्सेसफुल तो हुआ ही है, लेकिन इसको अगर और कॉमर्शियल लेवल पे जब लेके जाया जाएगा तो आपकी जो रॉकेट लॉन्चिंग की कॉस्ट है वो करीब 82% कम हो जाएगी। और आपको ऐसे मालूम है एलन मस्क जो है वो स्पेस टूरिज्म को एक वर्टिकल डेवलप कर रहा है। तो यू कैन इमेजिन इंडिया कैन बी अ मेजर मेजर मार्केट फॉर स्पेस टूरिज्म विद दिस रिड्यूस्ड कॉस्ट। आई होप यू कैन रिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट। सो इस तरह से ये तीन हम आपको मेजर स्पेशलाइजेशंस के बारे में बता चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एनालिटिक्स, राइट। सो एनालिटिक्स हैज गॉट immense potential. So you can raise questions related to data strategy consultant, IT business analyst, business intelligence, and data scientist. These are typical, the roles in the in the analytical business, which actually support to the core companies and as well as to the digital companies, e-commerce companies, right? So it has got ये जो digitalization है ना, it has become a fifth फंक्शनल एरिया। आप ऐसे समझ लो बिजनेसेस में जैसे हमारे चार जो फंक्शनल एरियाज होते हैं, एचआर, ओबी, फाइनेंस, ऑपरेशंस, अब पांचवा एरिया जो आ गया है वो डिजिटलाइजेशन आ गया। तो इट इज जस्ट लाइक दैट, सो यू कैन नॉट अवॉइड दैट। नेक्स्ट, कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, supply planner, demand planner, procurement, right? Third party business development, inventory planner, transport planner, logistic consulting, production planning, and stores management. So these are some of the areas with which you can start with your research questions and you can plan. I think you should write an SOP this will give you an idea how you should start your MBA program. अगर आप इस ओरिएंटेशन से डे 1 से अपना काम शुरू कर दोगे, आई एम श्योर हम सबको अपने डिजायर्ड गोल्स अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही strategy and consulting, lot of students have given their interest. So corporate development manager, management consultant, corporate strategist, mergers and acquisition consultant, business development manager, venture capitalist, investment capitalist, PE analyst, right? So these are some of the profiles which एंड अलॉन्ग विद वो एक सस्टेनेबिलिटी वाला भी एरिया आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जितनी भी जो कंसल्टिंग हैं बिग फोर्स को आप देखोगे तो उनकी वेबसाइट पे जाके देखो तो इस सस्टेनेबिलिटी एक उनका वर्टिकल होता जा रहा है। और उसके पीछे रीजन ये है, आप लोग अगर कॉप 27 को फॉलो कर रहे होगे तो अब sustainability is becoming an integrated part of businesses, right? So 2021 में ही सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 1000 कंपनीज को ESG कंप्लायंस के लिए वो कर दिया है, ठीक है, इट्स अ लीगल कंप्लायंस। तो ESG इज एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, सो इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी टारगेट। तो उसको भी ओवरऑल आपको रखना है हर स्पेशलाइजेशन में दिमाग में अपने। सो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, बिजनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड कंसल्टिंग, sorry, digitalization. So these are three broader verticals in which you can develop your interests with respect to your specializations. जनरल स्पेशलाइजेशंस में अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो ब्रांड मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, product manager, public relation manager, and sales manager. These are some of the profiles with which you can think of.
In finance, investment banker, portfolio manager, corporate finance manager, financial consultant, credit analyst, PE analyst are a kind of the areas which you can develop as a research areas. Similarly, in HR, HR manager, talent acquisition is a very crucial area for the corporate. Compensation and benefit manager, HR information system, labor relationship specialist, employee relationship and diversity and inclusion manager. ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं. यू कैन read more about these areas and you can develop your research question in these areas. International business, it is similar to the core programs, but international BD manager, international sales manager, international logistics manager, sales, financial analyst. So these can be the compliance area. Yeah, international trade compliance officer, it is very rare kind of a skill set which you can develop for the industry. हम लोग एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मेटावर्स एंड वेब 3.0. So what kind of jobs, what kind of research areas which you can look at or skill set you can look at? So metaverse product manager, blockchain product manager, virtual event manager, metaverse marketing manager, defi analyst, right? Virtual reality content chief metaverse officer, NFT market strategist, and so on and so forth. Next specialization is family business consultant, entrepreneurship coach, venture capitalist, startup founder, and so on and so forth. Next. And at the end, we have operations management. So operation manager, supply chain manager, process improvement manager, quality control manager, manufacturing manager, project manager, and operation research analyst. So these are some of the areas. I am trying to close so that we can have some time to interact and to answer your questions. So floor is open for Q&A. We can take up the questions one by one. What about the marketing placement? Yeah. So marketing placement, uh, since this session is on SOP, so I could not, I did not collect that data, but let me give you the figures. We have got highest package at 30 lakh rupees. And then after that, 27 lakhs, 23 lakhs, then 21 lakh, then 17 lakhs, then 13 lakhs, 14 lakhs, like that. And if you really want this data to be discussed, then we can plan another session on how to prepare for placement, and then we will give you the real statistics of each of the program, that in what kind of profiles these students have gone and what kind of packages have been offered. Prasoom sir, if I may add on to what you are saying, if you allow me. So Yeah, the yeah, please, average please. placement students at School of Business, as Prasoom sir has already mentioned, 30 lakhs is the highest package which has gone. And it's not a specific program, but across all programs, students have done various achievements and they have succeeded. The average 10% salary, average salary for top 10% is 18 lakhs, and average salary for top 20% is 13.6 lakh. You can see that typically it's an ROI for 1:1 or half a year ROI kind of a thing. And we would want our students, we aspire that our student should go take this higher, because you are the one who have to perform. So we look every time we try and we prepare our students to break the record of the previous year. Yeah. Right. So Anushka has asked a question. Amit, 1 minute. Anushka has asked about CMA kind of question was there. She Yes, is I will confused. read it out for you, sir. Currently, I am a Sure. CMA cost and management account finalist. I am a bit Right. confused between finance and strategy and consulting. Can you please guide me regarding the same? From Anushka Bish. Right.
So, Anushka, can you tell us whether you have cleared CMA? If you have cleared CMA, then you should go for consulting and strategy and consulting. If you haven't, then we need to discuss again, but that needs separate time for that. Okay, तो अगर आपका CMA क्लियर हो गया है तो आप कंसल्टिंग एंड स्ट्रेटजी को सोचो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consultants as a career, how far I can go? Oh, there is no limit to it, Oh, sir. you you can Prashant spend Kumar many Singh has lives. asked this question. Yeah, Yeah. Prashant. So Prashant, you can spend many lives. This is such a challenging area, right? And you will keep on get the challenges and you can keep on working. So So there you is no can, end to it, Prashant, as Dr. Prasoom is saying. Consultancy is not now limited to only to Big Fours. Consultancy is now has gone far and wide beyond Big Four. Now we have strategy and consulting offices in the new startup. India is the hub of the new startup unicorns. So we have strategy offices, consulting offices at these new startups also. We also have strategy and consulting offices coming up in traditional organizations. So it's growing, and we recently had Mr. Nana from KPMG, who's the head of India National Lighthouse KPMG, and he has mentioned that it's going to grow strong for a very, very long time, leaps and bounds. Though I must say that while this looks to be a glamorous career, it has also, its own drawbacks. You have to work a lot, and there is no substitute for hard work and slogging in consultancy. Forget about work life career kind of a thing. If you're coming for consultancy, be ready 24 by 7. You'll have global clients. You will have to be there on the job. Forget about, the finer aspects of having fun in the initial year. And once you have succeeded, and that's across all the programs, sir, if I may, I'll stop over here. yeah, please. What is the future of logistics from Rishabh Sharma? सच अ ब्रॉड क्वेश्चन यू आर आस्किंग. अगर आपने कुछ स्पेसिफिक, इतना आपको हमने बताया, अगर कुछ स्पेसिफिक पूछते, देखो लॉजिस्टिक्स का स्कोप आपको मैं बताऊं, जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तब से स्टैटिस्टिक्स ये कह रहा है कि कंपनीज की लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हुई है, और जो लॉजिस्टिक बिजनेस है वो 25% 26% ग्रो किया है. ठीक है, और अगर ये पेंडेमिक नहीं हुआ होता तो शायद ये बिजनेस और भी ज्यादा शेप में, बड़े शेप में होता. तो देयर इज ह्यूज. और आपकी इकोनॉमी और लॉजिस्टिक्स का ना बड़ा क्लोज रिलेशन है. आपकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रही है, और यूजुअली लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो 10 to 12% होती है किसी भी इकोनॉमी में, जीडीपी का 10 to 12%. ठीक है, तो आप समझो कि जैसे जैसे जीडीपी ग्रो कर रहा है वैसे वैसे लॉजिस्टिक्स भी ग्रो करेगा. गुड, नेक्स्ट. Before next question, one small announcement. In the chat section, I have just entered the link of our School of Business LinkedIn page. You can go ahead, you can follow the page, and you can follow School of Business. And also I have pasted Instagram. Both these areas will give you, a fair amount of knowledge about what are the courses, what are the activities happening at School of Business, and also at the campus life. So the next question is also related to logistics supply chain. Abir asks, sir, what type digitalization would be in logistics and supply chain? You can imagine use of during the for tracking your rolling stock, right? So a lot of digitalization is being used in that, and lot of data analytics is involved. Like in airline business, if you see, I don't know how do you understand the logistics, तो लेकिन हम vertically अगर divide करना चाहें तो आपको मालूम है कि एक रेवेन्यू मैनेजर का, एयरलाइन रेवेन्यू मैनेजर का प्रोफाइल होता है, लेकिन उसको बैकएंड पे सपोर्ट करने के लिए देयर इज अ डेटा एनालिस्ट जो कि केवल फ्लाइट के मूवमेंट्स को एनालाइज करके वो रेवेन्यू मैनेजर को बताता है. सो व्हाट आई मीन टू से दैट इन एवरी सेक्टर, आपका रोड ट्रांसपोर्ट में भी किस तरह से आप अपने मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे हो, लॉट ऑफ डेटा इज बीइंग जनरेटेड, where lot of technologies like
artificial intelligence or machine learning and IoT and so on and so forth are being used in the logistics sector. So it would be interesting area if you can develop your interest in that. The next question is, sir, will there be jobs in future in oil and gas management as everything is gradually shifting towards renewable energy? Akanksha Prakash. Now, Akanksha, very good question, but don't worry, oil and gas is going to be there at least for next 100 years. In fact, interesting thing, Dr. Prasoom, yesterday I was there at ONGC with the head of their ONGC Academy, Mr. Shashi Rajan. If you remember, Dr. Right. Prasoom, he also came and visited and spoke with our students. He's a very, Yes. very learned person, and he is at a very, very senior profile. He's the head of ONGC Academy, which looks after all the training and placement for entire ONGC, which is a Maharatna company, entire workforce. And he mentioned in our discussion that there is, some talk about people saying that oil and gas industry would collapse, and because renewable and clean energy is coming. But he himself at such a stature, he said that the same thing which you just mentioned, that for next 100 years, nothing is going to change in oil and gas industry. Yeah, thank you. देखो इसके पीछे एक रीजन है जी अमित जी और एंड द कैंडिडेट हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन. जी मैं जो बोल रहा हूँ उस आर्गुमेंट का सपोर्ट ये है कि देखिए, एक तो आपकी करंट डिमांड है एनर्जी की, और एक डिमांड है जो कि फ्यूचर डिमांड है, which will be which will be growing along with GDP growth as well as population growth. तो सवाल उठता है कि आपको एक्चुअली एनर्जी सोर्सेज को ऐड ऑन करना ही पड़ेगा. तो आपने जो न्यू एनर्जी सोर्सेज ऐड करोगे वो आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंपनसेट करेगा. तो एक्चुअली ये जो ग्रोथ होगी वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगी कन्वेंशनल को. दिस इज व्हाट आई फील. यू कैन क्रॉस चेक इट. चलिए No, you नेक्स्ट. are absolutely right, sir. You are absolutely right. If my Ayush Negi is asking, if my purpose is to venture into the Big Four consultancy, how and what kind of relevant project can I take up while in my course? So, yes, sir. इट्स अ बिग क्वेश्चन. लेकिन आप पहली चीज वही एसओपी में जो आपको बता रहा हूं, अगर आप ये एक्सरसाइज कर लो ना और आप हमको भेज दो तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. प्रदीप ने पूछा ना, किसने पूछा था? सर ये पूछा है आयुष नेगी नेगी ने. हाँ जी. नेगी ने. तो नेगी, आप अगर एक अपना एसओपी बनाओ, फिर हम लोग, क्योंकि ये बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है. वी डोंट नो व्हाट इज योर बैकग्राउंड. तुमने ग्रेजुएशन क्या किया है, हमें ये नहीं मालूम आपका गोल क्या है, हमको ये नहीं मालूम आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो. लेकिन अगर आप ये चीजें करोगे और हमको बताओगे, देन वी विल बी एबल टू हेल्प यू इन दैट एंड डेफिनेटली विल डू दैट. मतलब अगर हम आपको कह रहे हैं कि आप हमें एसओपी 1 पेज बना के भेजो, तो मैं आपको रेस्पॉन्ड करूंगा उसके ऊपर. Very nice. Thank you, Dr. Prasoom. There is one question from Yash. Can you please provide the link from where I can buy the book straight from the gut? Yash, today I don't think so. We should be asking you where to which all links we have to go to. You search all the sites, Amazon, etc., and you will find the book. I don't think so. We will have to provide you the link. So all the best. You buy the book, read it, and also share with us what is your learning. Shruti asked us, as I'm going to pursue MBA in oil and gas, so are we supposed to learn some coding skills beforehand, and on what things we should work upon? श्रुति, मैंने आप लोगों को ब्रॉडर एरियाज दिए हुए हैं. आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको जाना किस एरिया. अगर आपको एनालिटिक्स और उस एरिया में जाना है, तो यस, यू शुड गो फॉर कोडिंग एंड यू कैन लर्न ऑल दीज स्किल सेट प्री हैंड. एंड आप उस स्किल सेट को लेके आके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ. ठीक है, मैं आपको बताऊं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे इन द सेंस जो कि वेल प्लेस्ड हैं. ठीक है, उन्होंने अपने 1 साल के स्टे के दौरान 8-8, 10-10 प्रोजेक्ट किए हैं, अदर देन देयर क्रेडिट कोर्सेज. तो वो आप अपने इंटरेस्ट को डेवलप करो, अपनी बैकग्राउंड से अलाइन करो. तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन बहुत वैलिड हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो. लेकिन अगर आप इसको एक पॉजिटिव एंड देना चाहते हो, तो आप एक 1 पेजर लिखो. आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और हमें भी क्लैरिटी आएगी आपको समझने में. ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसमें जो प्रोफेसर्स हैं वो उनको शेयर करके, एंड दे विल रेस्पेक्टिव स्पेशलाइजेशन के लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए. Thank you.
Sir, if we talk about SAP, then which module of SAP will be suitable for oil and gas management? SAP has very different modules. Good question, but I think I will not be able to answer this question. But again, you can come back with your SOP. We will definitely give you the idea. Yeah, and Vinal, you may, once you join, there would be various tools, not only SAP. Apart from that, various tools will be there in the program. So you don't worry about the program. The intent is that in your SOP, it should be structured and you have a structured way of thinking before you join. And then we can help you, apart from your studies, to work towards that structured way of thinking so that you can succeed and you can achieve the objective with which you are joining our MBA program. So there would be many tools, not only SAP. So once you join the program, you will learn all of them. Sir, I'm from BCom background and I'm pursuing logistics and supply chain management. What are the exposure I can get from UPES? Oh, interesting question, sir. What are the exposure? Abhishek Thakur Saab is asking this. देखो, एक्सपोजर आपको बड़ा मल्टी डायमेंशनल वर्ड है, ठीक है। पहला एक्सपोजर आपको मिलता है जब आप आते हो, तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है यूपीएस का कि इसके अंदर 10 स्कूल्स हैं विद डिफरेंट डिसिप्लिन्स, राइट। आपको लॉ स्कूल भी मिलेगा, आपको लिबरल भी मिलेगा, मॉडर्न मीडिया भी मिलेगा, आपको हेल्थ भी मिलेगा, आपको डिज़ाइन भी मिलेगा, इंजीनियरिंग भी मिलेगा, कंप्यूटर। सो एक तो जो मल्टी डिसिप्लिनैरिटी है वो एक्सपोजर बहुत स्टूडेंट को फ़ायदा देता है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि हमारे यहाँ के जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे स्टूडेंट काउंसिल है, स्टूडेंट काउंसिल से जो आपको एक्सपोजर मिलेगा उसमें मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस के लोग, स्टूडेंट्स आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तीसरी चीज़ है हमारे यहाँ के जो इवेंट्स हैं, जैसे उद्यम इवेंट है, ये हमारा एनुअल इवेंट है जो हम हर साल करते हैं, इससे आपको एक्सपोजर मिलेगा। इंडस्ट्रियल विजिट से एक्सपोजर मिलेगा। इंटरनेशनल प्रोग्राम से अगर आप जा सके, या हम लोग एक बड़ा रेगुलर प्रोग्राम करते हैं जिसमें फैकल्टी जो है वो डिलीवर करता है, फॉरेन फैकल्टी डिलीवर द सेशन टू द स्टूडेंट्स। सो तो वो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना एक्सपोजर का, वो एक्सपोजर बड़ा मल्टी फेसेटेड और मल्टी डायमेंशनल है। डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको लिवरेज करते हो, ठीक है। यू कैन इमेजिन एनी टाइप ऑफ एक्सपोजर इज देयर, मतलब इवन देयर आर सम बैड एक्सपोजर्स आल्सो, बट यू हैव टू कीप yourself in discipline. So there is one question. Can you tell me, Rasik is asking, can you tell me about ERDM of oil and gas in detail? EDRM, energy derivative and risk management. I think it should be that, but over here it is written as ERDM. So Rasik, can you please again clarify if it is ERDM or it is EDRM? What exactly it is? I think it is at EDRM. Okay. It's a very prospective area. और मैं तुम्हें बता दूं, यूपीएस में ऑयल एंड गैस से जितने भी बच्चों ने इस एरिया में स्विच किया है बहुत पैसा कमा रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इन इंडिया। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में बड़ा रेस्ट्रिक्टेड मार्केट है अभी ट्रेडिंग का, क्रूड ऑयल को लेके या पावर ट्रेडिंग को लेके, बट इन टाइम्स टू कम व्हेन इट विल बी ओपन। लेकिन स्किल सेट इतना प्रेशियस है कि आपके लिए जॉब की कमी नहीं है। Great. Next. Kavya asks, sir, for environmental, social and governance, ESG sector, which MBA specialization should we go for? Very good. ESG स्पेशलाइजेशन के लिए देखो, ये एक ऐसा एरिया है जो कि इट इज जस्ट लाइक डिजिटलाइजेशन। तो हर स्पेशलाइजेशन में इसका एक वर्टिकल है, क्योंकि हर कंपनी को, आप लोग एसडीजी के बारे में तो जानते होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो एसडीजी 12 जो है वो रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी कॉरपोरेट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको अपनी प्रोडक्शन प्रोसेसेस को या प्रोसेसेस को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओरिएंटेड बनाना है। तो ये जो ईएसजी एरिया है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एनी सेक्टर। और एज फार एज दिस सब्जेक्ट इज कंसर्न, तो हम लोगों ने एक सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस करके एक कोर कोर्स इंट्रोड्यूस किया है इन ऑल द एमबीएस, जहाँ पे ये कोर्स आपको दिया जाएगा, जहाँ पे ESG compliance, ESG auditing, all these things will be as a concept in the course will be discussed. Great.
Sir, Vanshika Saxena is asking, I previously mentioned that I'll be choosing marketing as the core specialization. Is it possible to pursue marketing with minor in business analytics at UPES? वंशिका, ये यूपीएस में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि मेजर माइनर का चक्कर नहीं है, बल्कि आप तो अपनी प्रोफाइलिंग के बारे में सोचो। तो यस, यू कैन क्लब मार्केटिंग विद एनालिटिक्स, यस यू Great. कैन क्लब। देखो, डिपेंड करता है ना आपको। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो हम लोग एक सेशन डिजाइन कर सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट, ठीक है। बट यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट। अमित जी को आपको बोलना पड़ेगा, तब हम लोग उस चीज को लेके आ सकते हैं, बट यू विल हैव टू गिव सम टाइम, ओके, फॉर दैट। तो इसमें ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 8 प्रोजेक्ट किए एक बच्चे ने, और वो 8 प्रोजेक्ट जो प्रोस्पेक्टिव एरियाज हैं, उन प्रोस्पेक्टिव एरियाज पे रख के उसने अपने प्रोजेक्ट्स किए। अब डिपेंड करता है कि देखो, ये तो भगवान बता सकता है, या आई डोंट नो कि कौन सी कंपनी कब आने वाली है, ठीक है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि बड़ी प्री डिटर्मिन डेट्स के साथ कंपनीज आती हैं। तो आपके मतलब सीवी में वो सारे तरकश होने चाहिए, जो जितनी भी कंपनीज आ रही हैं उनको प्रेजेंट करना। तो अगर you should have something on digitalization, you should have something on sustainability also, and you should have something related to business also। ये 3 हमने आपको जो verticals बताए हैं, business, sustainability and digitalization, राइट। तो आपको ये ध्यान में रख के और आप ये कर सकते हो। आपका ये क्वेश्चन जो है वो प्रोफाइलिंग से रिलेटेड है, और जो ट्रेडिशनली मेजर माइनर के जो कॉन्सेप्ट चलते थे, वो एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट करते हैं स्टूडेंट को, किसी एक मेजर को ले लो, किसी एक माइनर को ले लो। हम तो कह रहे हैं आप एक स्पेशलाइजेशन के साथ लेके, और जितने भी प्रोस्पेक्टिव एरियाज हैं उनमें अपने अपने आप इंटरेस्ट डेवलप कर लीजिए इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स, so you will be well prepared for any type of company। Right. I hope I answered the question। Sure, sir. Thank you. Another announcement, I have just posted on chat section our YouTube link where you can see the YouTube where our students are speaking about various alumni which are speaking on this YouTube channel, and you can forward it. And the next is what I'm sharing with you is the YouTube link for Pratik Sagar, whose video Dr. Prasoom played, but you were not able to hear. So follow us on our LinkedIn page, our Instagram page, and our YouTube page also for various videos. You'll get a lot of information because the students are speaking. Videos of our director is over there. He has also mentioned what you need to do when you are joining, how you can be a successful MBA graduate, so on and so forth. Many videos, many informational content is there. So keep on following us on Instagram, LinkedIn, and YouTube. Another question, I think it is more or less similar to what Rishabh is asking, as previous somebody asked, how far can anyone go in logistics and supply chain management? You join UPES, MBA, LSCM, and you can get into LSCM. But Very how easy। far you can go? So there is no limit to it. How Again, far? Okay, yeah, okay। how How far? far? Okay, okay, okay। हाँ, तो इट्स अ ग्रोइंग सेक्टर। हमने आपको स्टैटिस्टिक्स दिया, देखो जीडीपी ग्रोथ का लॉजिस्टिक ग्रोथ के साथ क्या रिलेशन है। तो एज लॉन्ग एज दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, challenges will also be there। keep sustainability and digitalization in mind। अपना स्पेस क्रिएट करना है। देखो, एमबीए करने के बाद जब आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो एक तो वहां की एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, और एक आप जा रहे हो इंडस्ट्री में। हाउ विल यू क्रिएट योर स्पेस, ये ध्यान में रखना है आपको। तो जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है वो एग्जिस्टिंग काम को कर रही है। आपका स्पेस कहाँ बन सकता है? जो काम उनको नहीं आता, उनको डिजिटलाइजेशन नहीं आता, उनको सस्टेनेबिलिटी नहीं आता। अगर आप इन 2 एरियाज को ग्रो करो और अपने अपने स्पेशलाइजेशन को में महारत हासिल करो, और आपको एक अच्छा वो मिल सकता है, एंड यू कैन गो फॉर लॉन्ग, नो डाउट अबाउट। So there was one question that I want to visit the campus before the session start. Any specific instruction? My reply is please visit, avoid weekends. Feel free to meet me. My name is Amit Narayan Kapoor. I'll be happy to guide you. And if required, we will definitely take our discussion forward. I'll quickly do it, sir, because we are shooting our time off. It's already 8 o'clock and I still have 18 open questions. The question seems to be coming in and I'm very happy about it that our participants are asking question. We have answered almost 50 now till now, but we have 18 more. So great. Keep on asking.
Sir, for business, so Prakhar is asking for business analytics, is there some kind of online course I should take, like ML or something else related to data analytics before coming to the campus? आई थिंक प्रखर, मैंने आपको वो एरियाज बताए हैं एनालिटिक्स में, आप उन एरियाज को पिकअप करो और उन एरियाज पे रिसर्च करके एंड देन यू कम अप विद द रिसर्च क्वेश्चंस इन योर माइंड। ठीक है, और ये जो स्किल सेट्स की आप बात करो, somebody asked अबाउट कोडिंग, ठीक है, तो आप उस तरह की चीजों को कर सकते हो, देयर इज नो हार्म। देखो, ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, बट एक्सेस ऑफ नॉलेज कैन नेवर बी बैड। And सो if you're talking डोंट। about certification courses, Tableau, BI, you can do so free certification courses in Tableau, राइट। Google Analytics, BI for those who are interested into big data, into data analytics, and into marketing. There are many free courses available. In case you want to prepare beforehand, you can definitely do those courses. Next question by Shivang. I have selected marketing as a major specialization. Will I get a chance to work in green energy? सर, आई क्या क्या मार्केटिंग एज मेजर स्पेशल, विल आई गेट अ, ओ व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। आपको मालूम है रिलायंस का, रिलायंस बीपी इज अ जॉइंट वेंचर, so they have entered into setting up the EV charging stations, right? So they actually ask for the marketing profiles. So अगर उनको अपने चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने हैं तो वहां पे वो सेल्स और मार्केटिंग प्रोफाइल्स को ही एनकरेज करते हैं। So yes, you can. I hope I answered the question. Great, sir. Next is Lavish. I want to ask about entrepreneurship course. If some of the subjects are similar with other ones also, or entirely different. It is entirely different. Entrepreneurship course. Hmm. अगर तुमने मेरा स्लाइड देखा हो तो वेयर बी डिस्कस्ड द काइंड ऑफ द एरियाज वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट to the industry and to the businesses. Hmm. So just give me one moment, please. I am getting some technical. Okay. Sir, in which industry are data scientists required? Is banking sector needs a data scientist too? Of course, yes. Why not? क्यों नहीं? Hmm. आपको मालूम है इतना डेटा जनरेट हो रहा है, आप लोगों ने एक टर्म बिग डेटा सुना होगा। हर इंडस्ट्री जो है उसको उस डेटा की ज़रूरत है एंड दे वांट टू गेट अ होल्ड ऑन दैट। तो मैंने अभी जैसे आपको एयरलाइन इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, ऐसे ही आपकी जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है, राइट, ऐसे ही आपका ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, ऐसे ही आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। हर तरफ जो है डेटा इज बिकमिंग इम्पॉर्टेंट। और आपको मालूम है डेटा इज गोइंग टू बी एन ऑयल, ये एक चलता है स्टेटमेंट इंडस्ट्री में। तो आने वाले टाइम, जैसे आज की तारीख में ऑयल, क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे ही आने वाले टाइम में डेटा इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। और आपको सुना होगा आपने मार्क जकरबर्ग के स्टेटमेंट्स हैं, या जिस तरह का डेटा सेल करती है ये कंपनीज, फेसबुक और ये सारी चीजें, वो किसको सेल कर रही हैं एंड हाउ इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द बिजनेसेस और टू द पॉलिटिकल पार्टीज, वो इशू आप लोग को मालूम होगा क्या हुआ था। I was about to say that the data is new gold, but you rightly न्यू said वर्ड। data is new oil. Yeah. uh, okay. So that was Ishita. Rasik, I am a CA finalist student and I have chosen oil and gas field. Will CA background be beneficial for me in oil and gas? व्हाई नॉट? तुम तो चैंपियन हो गए भाई, फाइनेंस इन ऑयल एंड गैस। आपको मालूम है यू विल लर्न oil and gas marketing, sorry, accounting, oil and gas accounting, which is all together different vertical। तो आप उसमें डेवलप करोगे प्रोजेक्ट सेटअप, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, दीज आर दी हार्ड कोर इशूज विच द इंडस्ट्री इज फेसिंग। और आपको मालूम है वो जो एनर्जी ट्रांजिशन का एरिया है, क्या रसिक नाम था बच्चे का? हाँ, रसिक। तो वो जो एनर्जी ट्रांजिशन वाला एरिया है ना, उसमें इन ऑयल एंड गैस कंपनीज को एनर्जी ट्रांजिशन करना है, उसके लिए इन्हें फाइनेंस चाहिए एंड दे नीड सस्टेनेबल फाइनेंस। तो तुम्हारे जैसे लोग तो मतलब सोने की खान पे बैठे हुए हैं।
Prashant asked, what are the field I should prepare on before getting into consultancy, be it mentally? What are the field I should work on? Any skills required? What should be my thought process? Anything you want to convey from your side? Prashant, Very first good, of all, very good start question. reading a newspaper if you're not reading it. Every day you should be aware of what is happening in the industry. That is my two bit into it. And then I hand it over to Dr. Prasoom. How to prepare. या ये प्रशांत थे। प्रशांत, बहुत अच्छा Prashant. क्वेश्चन है। Hmm. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा इंटेलेक्ट शो करता है, ठीक है? तो वेरी गुड, कीप दिस इंटेलेक्ट मेंटेन। आपको करना क्या है? आपको पहली चीज ये है कि आपका रिसर्च ओरिएंटेशन होना चाहिए स्ट्रेटजी और कंसल्टिंग में। आपको डेटा पसंद आना चाहिए, डेटा से खेलना आना चाहिए आपको, ठीक है? तो आप इन कुछ 2-3 चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करो, तो आपको स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग में देखो, स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग इज़ ऑल अबाउट सजेस्टिंग न्यू थिंग्स टू द बिज़नेस, सजेस्टिंग सॉल्यूशंस टू द बिज़नेस। तो आपको जितना ज़्यादा आप वाइडली रीडर होगे, जैसा अमित जी ने बोला कि अपने आप को अपडेट रखो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो और तमाम चैनल्स को फ़ॉलो करो। एंड आपका जो ओरिएंटेशन है रिसर्च में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन, राइट? ऑब्जर्वेशन। अब आपको बताऊं कि रिटेल सेक्टर में कंसेप्ट है मिस्ट्री विजिट का, ठीक है? ये रिटेल सेक्टर में टिपिकली यूज किया जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब धीरे से ट्रांजिशन किया गया है एयरपोर्ट बिजनेस में भी। तो जो टर्मिनल पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज का जो जो बिल्डर है या जो ऑपरेटर है, वो मिस्ट्री विजिट करवाता है। तो how this concept transitioned from retail to aviation business, तो किसी कंसल्टेंट नहीं बताया होगा। गुड। Okay. So should I move on to the next question? या प्लीज प्लीज प्लीज। I have a 3-year gap as I was preparing for government exam. Anonymous, to what intensity would it be affecting my coursework and placements? आपको ये जो पीरियड है, इसको नल पीरियड नहीं बताना है। हाउ हैव यू कैपिटलाइज इट, ठीक है? उस चीज का आप अपना एक आर्टिकुलेशन डेवलप करो। आप ये मत सोचो कि आपने 3 साल तैयारी करी और वो वेस्ट चला गया। इट हैज नॉट गॉन वेस्ट, ठीक है? व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट्स यू हैव डेवलप्ड। हमारे ख्याल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में बहुत सारा नॉलेज आता है, ठीक है? बहुत सारे स्किल्स आते हैं, तो उनको आप वो आर्टिकुलेट करो। अगेन आई एम री एम्फेसाइजिंग कि आप एसओपी लिखो और उसमें ये चीज हाईलाइट करो, एंड देखते हैं हम लोग कि आप कैसे उसे कैपिटलाइज कर रहे हो। नेक्स्ट। Sir, how can UPS help in profile building? अरे भाई, हम लोग तो पूरा साल यही करते हैं। द डे यू विल एंटर इन द कैंपस, हमारा जो कैरियर सर्विसेज डिपार्टमेंट है, दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट विद यू। सो देयर इज अ वेरी मच इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस। जिसने भी पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। Uh, लेकिन मालूम है अमित, एक मिनट, मैं yes. सारे स्टूडेंट से यही बोलूंगा कि आपका ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एट द डे वन इन द कैंपस। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ओरिएंटेशन से आते हो तो हमारा काम भी आसान है और आपका काम भी आसान है, और कैरियर सर्विसेज का भी काम आसान हो जाएगा। So that's what I was writing also, sir. Students are encouraged and provided various opportunities to develop comprehensive, personality, career services, and edge team, which works in a structured way on the personality development program for the students, preparing them right from assessment level to giving trainings to preparing you for interviews, your resumes, everything is done. Your profile is being built over here. What we require is we need your commitment to succeed. So your attendance is mandatory. You have to give similar kind of a commitment what we are coming across with to succeed. So that's what's required. Sir, very quickly, another 10 minutes, we'll have to get it over with because I think we have overshoot our time by another 15 minutes now. For ESG sector, which MBA specialization should we go for? I think you have answered this before. I have done masters in environmental sciences. So across all programs, ESG sector is being covered. You can choose any specialization as what Dr. Prasoom has mentioned. Environmental science is a very appropriate specialization for profiling into ESG area. Yeah. Sir, I am from electrical and electronic background. I have decided to take oil and gas management. That's very good.
You will surely succeed. Our best wishes with you. I don't see there is a question over there. Sir, I want to know more about ESG sector. What kind of profile do we get? And you name any UPS alumni doing well in this sector. Okay. वेरी This is गुड cover. क्वेश्चन। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एसेंचर में हमारी एक स्टूडेंट है जो कि इस एरिया में, पर्टिकुलरली इसी एरिया में काम कर रही है। Okay. Akanksha's, are there any prerequisite to MBA oil and gas management? How will UPS help in profile building? I have answered the last part, both me and Dr. Prasoom. There are no prerequisites as such. We just need you to have a commitment. There's nothing like you are from a science background or a maths background or a BSc or an MSc, BSc background or BTech background. The class profile has a variety over here, and it is quite diverse, and there is no success ratio to what kind of a background you come from, as long as you are committed and you are putting your best efforts. So anything to add over there? No, yes, Do oil perfectly। and gas companies come for the finance profile as well? हाँ, आती हैं। That I think you have answered. Sir, I am a CA inter student and going for MBA in finance. What other courses should I go for to make my resume more attractive? That's from Umang. Umang, I think more than courses, find out the areas, right, जो हमने आपको लिस्ट किए हैं, और उन एरियाज को बिल्ड करने की कोशिश करो आप। So no more questions. We are at 8:14, and I think we should call it a day. It was very engaging. I'm sure students, they also gathered a lot of nuggets of wisdom from you. Thank you, Dr. Prasoom, for joining us, and thank you to all the students for taking out time. You will soon be hearing from us for the next session, which is going to happen in next 10 to 12 days. You will receive a mail, a message, and then we invite you to come over for more such interesting session. It will happen till the time you join UPS. Thank you, Prashant. Thank you, Siddhan. Great to have you with us, and we look forward to see you at the campus. Dr. Prasoom, thank you. Thank you so much. Thanks, students. Bye bye. Thank Thanks, you. Amit. Thank you, sir. Bye-bye.